I think this year I've taken it upon myself to make sure that such calls are not long enough. All I want to say is, I think job done, at least in the last few days. We have not met our targets. We're at 91% to target for the month of June. But at least in the last few days, we must appreciate the effort done by the team. I know the market is not very conducive like it was earlier, but the last mile push, I think, has been fantastically done. I'm just going to share my screen. I have the option, right, Atul? Yes, sir, you can share. Okay. So just so we are at 91.7% to target. Unfortunately, only 3 of our regions have met their targets. One being MP Jaipal's region, Maharashtra and Karnataka, Maharashtra and Goa for Malhar, and East Zone 1. None of the other regions were able to meet targets. And in many areas, we were struggling to even reach 80%. I understand there were difficulties. मेरे को पता है पटना में हमारा तरफ से issue चल रहा है with respect to the system. I understand Rajasthan, there was an issue on the last day. Having said that, I think it was a good push. But Umaid, I think it calls for more effort from our side in terms of doing everyday sale and not depending towards the end. Sure, sir. So job well done in the end, but we still have a lot of distance to go. Unfortunately, only 26 of our branches, and I'm counting 26 when I'm including the 5 branches which have not met targets. 26 branches only which have achieved 95% and above. Sir, can you increase the font, sir, little? It's very small. I think brilliant job done by Pune, Nigiri, Siliguri specifically. And I'm happy to see Ahmedabad back on its feet to a certain extent, which should be always 50 lakhs plus. Definitely a mention to Indore, who at one point in time was not comfortable even above 40 lakhs, has done 55. Jammu has done a fantastic job at 114. I know even Varanasi has crossed 1 crore this time, so fantastic job done. Guwahati, under these circumstances, has achieved 145. So very well done. I think keep it up. Bangalore also, I think there were always concerns that without STU, we cannot get to 85, 90. But I think those concerns now should be left behind. It's a branch which should be above 1 crore and we should rightfully reach there very, very shortly. So keep it up for these 26 branches, but the balance ones, I think we need to really pull up our socks. This number of 26 is, you can say it's close to 1/3. Only 1/3 of our branches meet targets. That means we will not be able to meet our company-wide objectives. And I think that is visible clearly when we look at our balance targets for the quarter. There is only one region which has met its Q1 target. Everybody else is lagging behind. Sanat is only marginally behind, but everybody else, there's a sizable difference in terms of the Q1 targets and what was set out to be. To the extent we have approximately 12.35 crores layover for the next 9 months. Initially, we had said that we will take this 12.35 and divide it into 9 months. But I think we've had a revisit of thoughts. And as Dineshji mentioned, it makes sense for the branch to have one constant number. कि उनको पता होना चाहिए उनका टारगेट कितना है और वही नंबर उनके पास बार-बार जाना चाहिए, उनको वो करना है. साथ में उनको बैकलॉग पता है. तो इसलिए हम टारगेट्स आपके जो 9 महीने में वो रिवाइज नहीं कर रहे हो दिस बैकलॉग. But this backlog will be shown to you at the end of every month. कि आपके रीजन का इतना बैकलॉग है, but we are not revising targets for the balance 9 months. So अरविंदर जी, आप पूरे साल के टारगेट्स डाल दीजिए अब instead of quarterly. आप सिस्टम में डाल दीजिए पूरे साल के मंथली टारगेट्स जो हैं, so that we don't have to change that and we don't have to do that effort all over again, and nobody has to see new numbers. Right, sir. But this backlog number is something which we have to take care of. We have done 114 crores in this quarter 1. From what I understand, our balance target for the balance 3 quarters, अगर यहीं पे डालें तो वो है 404.
plus 12. So आपका वो बन जाते हैं 416 in 3 quarters, and we've done 114 now. That basically means 50 crores plus as compared to what we've done in Q1 every quarter. So आप देख लो, that is the kind of effort which is required to complete the company objectives this year. Please gear up. 26 number needs to change to 62 really, really quickly. 62 of our branches need to start meeting targets. The other area of concern, which I think Harvinder ji has been sharing every time, sorry, this, yeah, that one, has been our overday stock. As of 1st of April, our over 90 was 15.39. As of 1st of May, it was 16.29. As of 1st of June, it was 16.91. As of 30th of June, it is 19.89. Please ये line wise, branch wise, अपने region में देखो कहाँ पे बढ़ा है. We need to take some corrective steps because I think our co-distributors are not doing anything right now. But we need to let go and sell this stock. This was the first time, I think in 2.5 years, where there was pressure for purchase in the last days, specifically for two lines, Bricks India and RBL. I think we would like to thank all of you for your support. Those orders were completed at our end. RBL has confirmed, Bricks India will confirm by tomorrow morning, I think. But thank you for that support. Mahipal ji, I don't see him on the call. Mahipal ji nahi hai? Atul? ज्वाइन किया था चेक कर Mahipal ji, I think phenomenal effort in RBL towards the end. But having said that, I don't think that's the right approach. Even if I talk about from head office, our pushing purchase like this is not the right approach. We have to aim for sale. When the sale comes in, purchase will happen automatically. But sometimes when there is pressure in terms of turnover discounts, and I think we've shared this earlier also, this year you're already seeing there's a lot of pressure on margins. Every opportunity to earn a little bit extra, we need to complete that. So there will be pressure in terms of purchase if the sale doesn't come. But that doesn't mean once we've made those purchases, we place those orders, we don't have to liquidate. We cannot be comfortable with the situation where over 90 is 19.89. So please analyze, see how we need to reduce that back to 15 crore levels. This 15.39 crore is also high actually. I remember during the middle of the year, it was close to, it had gone down to 13 crores also. So if you compare it to that, we're above by about 7 crores. Pressure on purchase will continue. And I'm telling you that because there is no way we can lose margins in terms of TODs. Aapka is saal margin already बहुत stretched hai. You can see the kind of discounts which have been offered in the market, which we are offering in the market. Our margins are lesser as compared to earlier. So हमारे को turnover discount पूरा करने के लिए ये तो purchase तो पूरा करना पड़ेगा. Better ये होगा कि अगर हमारी sale पहले आ जाए और फिर purchase खुद हो जाए. लेकिन अगर sale नहीं आएगी तो end में हमारे को purchase करना पड़ेगा. So I'm saying, I will repeat because Mahipal ji was not there. I would say thank you for the support in terms of purchase in the last couple of days. But ideally, we have to sell first and then purchase. Not in the interest of losing TOD, we might have to do an extra bit towards the last couple of days. Mahipal ji had mentioned special thank you to you for RBL in terms of purchase. I think आपका maximum support आया था, so thank you for that. Dilvia game yesterday, sir. But having said that, I think we all of us together have to see 19.89 over 90 कौन सी line में कौन सी branch में पड़ा है, and targeted focus is required to reduce this. Otherwise, this will become really big towards the end of the year. And remember, जो आपका over 90 आज की date में है, this is what is going to be over 1 year by the end of the year.
में देखिए कहाँ पे कौन सी ब्रांच में कितना है ओवर 90, उसको कैसे लिक्विडेट करना है. बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इसके अंदर आपके पास काफी ओल्ड डेट का मटेरियल भी है, इंक्लूडिंग फॉर आरएमएल, इंक्लूडिंग फॉर सम अदर लाइंस ऑल्सो. आई थिंक आरबीएल का इतना नहीं होगा, बट आरबीएल का भी थोड़ा बहुत है, बट आरएमएल का होगा. लुक का सारा ही अब ओल्ड रेट मटेरियल हो गया, उनका प्राइस राइज अब आने वाला है जुलाई में. सो ऑल ऑफ दिस which we have old rate should not continue with us. It should be liquidated very quickly as and when we have the opportunity of rate increases. Coming to outstanding, I would say fantastic job done this month. From 13 crores at the beginning of the month, we've reduced it to 960. So job well done. Keep that up. We need to take this down to 739, 730, 700, not more than that. अभी भी 2.5 crore हमारे इसमें एक्सेस है जो हमारे को मार्केट से कलेक्ट करना है. So please continue the effort in that area and collect that money as quickly as possible from the market. I've already spoken about Breaks India and RBL orders. These are lines where TODs are very, very important. They're our largest lines. Even a 0.5% or a 1% TOD makes a huge difference to our bottom line. So we can't lose it. So if we don't have the sale towards the end of the quarter, you will have this pressure of ordering. Having said that, there are other lines. Other lines like Mahle. I think there was a focus from our side this month, knowing that we will not reach the target. Let me give you some background to it. Mahle has a monthly target. It's not rollover. If we achieve that target, we get 1% for that particular month. This month, the target was 80 lakhs, and we knew it was not going to be possible to do 80 lakhs, primarily because we are already fairly well stocked in Mahle. So it was a conscious call from the head office saying that we will not purchase much this month. We'll make sure that we get our target next month. Plus, if our purchases this month is lesser, the loss of that 1% this month will be lesser. That is why we had sent out that request. Let's try and place those orders from 1st of July itself. ताकि आपका महीने में जुलाई में आपका टारगेट मीट होगा, आपको वो 1% भी मिलेगा. जो आपने जून की परचेजेस जुलाई में करी उस पर भी 1% मिलेगा. आपका जो लॉस होगा ऑफ दैट 1% जो हमारे को जून का नहीं मिलेगा वो मिनिमल हो जाएगा. Having said that, I think we still released some decent orders. I do understand that Delhi, there was a specific order which they had given a scheme, and they had said that that scheme is only available till 30th June. I'm not going to get into nitty-gritties of it, but the only thing I'm going to say is I think with clearer communication from both ends, from head office as well as regional heads as well as branches, it will only help save margin for the company, get more money in. All of us have the same interest, which is maximizing sale with the best bottom line possible. Till the time we have that aim in mind, I don't think there will be any problem in terms of coordinating. I don't know if our intent from head office was clear to all regions on that. If any region had a reason to place orders, obviously they would have had a reason. They would have done the analysis in terms of their margins. That's why they were placing orders, or if that was clearly communicated to HO. If that was a situation that this kind of a catch-22 we would not have been. Having said that, what's done is done. Keep it dusted. That going forward, we don't ahead. मीटिंग चल रही है. हमारे को एक ही चीज याद रखनी है, हम सबका मोटिव एक ही है, टॉप लाइन ग्रो करना है विद द हेल्दीएस्ट बॉटम लाइन, कीपिंग आवर इन्वेंटरी एंड आउटस्टैंडिंग हेल्थ. That will help all of us grow. Not one of us can grow in the company. All of us have to go together. Please remember that. We have to fill in for each other's weaknesses. We have to fill in for each other's absence in case if required. Because if we have to move ahead, we can only move ahead together. The other good news is, I think the incentives, performance bonus, other outflows like incentives from Contitech, incentives from Harrison, all of those will be released to each and everyone in this month. That will be done. Other good, I think, congratulations to each and every member of JMA team.
We are going ahead and buying a bigger warehouse in Kanpur today. It is being registered as we speak. That is why Gulati ji is not here. So I'm sure that will further help UP region grow further. Please join me in congratulating Mr. Gulati and the company in totality in terms of growth and looking at better potential for our growth going forward. The other big, I think, congratulatory news should be for our South region. Auto-like billing should start today, if my information is correct. Vivek ji, Harvinder ji, please fill me in if they started billing today for our Karnataka branches. I know they were already billing in Goa. Vivek ji, शुरू हो गया है आज? उन्होंने register वगैरह हो गया? आप mute में? Auto-like order they have registered, but billing I think they will start from July. जुलाई आ गया है. तो आज जुलाई में है। From today. वो पूछो आज शुरू हो गई कि नहीं? वही पूछा. नहीं अभी टाइम लगेगा, एक आध दिन में पता चल जाएगा. But having said that, I think this is a very, very good break for us. SFL started last month. Auto-like starting today in Karnataka. So congratulations to everybody in the team, because for them to get the line in South in Karnataka, it is North, East and West which performed like the way they have, particularly in those lines in the last 2 years, which have helped open doors in South. Plus our constant effort through Vivek ji, who've been knocking their door ever since. So finally we have a breakthrough. SFL last month and Auto-like this month. Congratulations once again. I think another round of congratulations, which is in order, is Mr. Gaur. Highest ever government billing in a month. This year should be looking good, thanks to some additional orders and thanks to some additional business that we banked, specifically in Maharashtra. I think government business should be healthy and we are looking at a minimum of 20 crores this year. Correct, Mr. Gaur? Correct, sir. Well done and congratulations, Mr. Gaur. Keep it up. Thank you, sir. That is another area we should be doing well in. The last thing that I want to say is, in our own lines, it actually disturbs me to see a JMA Luke sale last month only to the extent of 55 lakhs. I don't understand that. We have such numbers of 75, 80. I understand there will be pricing concerns areas in an inflation market. But we have to overcome all of those. This is our own line, this is our own baby. If you don't have emotional attachment to it, at least have financial attachment to it. अगर आपका जो incentive है, if I'm not wrong, our total incentive for branch and for lines is in the range of approximately 55 lakhs, including Contitech, Harrison, all lines. And all branch-wise and sales incentives and net profit incentives. This is not including the PV which is there, but this is only the incentive component per se. It's 55 lakhs this year, which will be dispersed this month. I don't know how many of us are aware of what contribution the JMA Lube is making to that. $55 का आधा है जो आपका लाइन वाइज इंसेंटिव और आधा है आपका ब्रांच और नेट प्रॉफिट. उस लाइन वाइज इंसेंटिव का जो 60% कंपोनेंट है, that comes from JMA Lube. That means if you look at it, overall आपका total incentive में से 30% of it is contributed from JMA Lube alone. तो अगर emotional attachment नहीं है, at least look at the financial attachment, because sizable component of all incentive, PB के अंदर वो separately नहीं दिखते, but I'm telling you that is also formed by a lot of these same incentives. It's just that there's no direct sale attached to it, so we can't assign that number, but it is a derivation of the same formula. 30% of all incentives which are paid out by the company are on the basis of just JMA Lube. If you add the other lines, it will be close to 35-40%. First, we should have emotional attachment to the product. There will be inflationary effects.
We are not like other manufacturers or bigger manufacturers who are capable to hold the price for long. अगर हमारे को पीछे price increase आएगा, हमारे को वो आगे pass on करना पड़ेगा. Some manufacturers might have the might have the size, might have the pockets deep enough to hold on to those increase for a period of 1 month, 2 months, 3 months, depending on how deep their pockets are. We don't have. We have to please understand this. We have to accept it. We have to be emotionally attached to the product. And lastly, if we are not emotionally attached, I think this is the first time when I've explained what is the kind of contribution that JMA Lube does to our total incentives. We should at least have financial connect to the product, because of which all of us should be geared towards making that maximum. A big drop of 20 to 25 lakhs in a line like JMA Lube really hurts us on a monthly basis. This is something which should not be acceptable to anybody on this call. Not one person. It should not be acceptable to anyone on this call. So please analyze, see what has gone wrong, what needs correction. That sale needs to come back up to 75 to 80 lakhs. Otherwise, what we talk about the fact that we're the only distribution house with an incentive scheme like the way we have, where we have a payout of total, if I look at it, close to about 55 lakhs is in that case, and 25 another about approximately 75 to 80 lakhs, it means nothing. So let's get our house in order. We need to make sure that we have sale, more of our branches, more of our regions meet targets. This backlog that we've created in Q1 needs to be covered up in Q2, Q3, and Q4. Our overday stock needs to be controlled. If we don't want pressures in purchases, please make sure that we have sales. Even we don't like we are not correct in our approach for pushing purchases. But if sales does not come through, we don't have an option but to put that pressure to earn our TOBs. This year is anyways very difficult on margins, and we have to make sure that we get all our TOBs in place. Incentives will be released this month. And I think 2-3 areas which I've already congratulated in, that's really, really encouraging. And we hope the best for JMA going forward. The last thing, please look at JMA. It pains me to see the kind of drop that I've seen. Best of luck for this quarter and this month and the year going forward. I'm sure this is going to be one of our better years that we've seen. If all of you also believe the same thing through your heart, I'm sure that kind of performance will be seen. Thank you. Aditi, over to you. I think mostly whatever I wanted to say has already been covered. I think Varun has taken a lot of points in detail and mostly similar only. Firstly, I would like to start with June. Japana, please data share kar do June ka. In the month of June, what I'm seeing in the month of June, if I look at our number of branches which have achieved targets, this month, 32% of our branches have achieved targets, which is 26 branches in all. This is only for June, not for the quarter. If I look at MP, Jaipal has 3 branches under him. All 3 of them have achieved the target, and this is 112% to sale. If I look at Mr. Malhar, out of 11, 6 branches have achieved target, 54%. And his achievement to target is the second highest, both in terms of number of branches achieving targets as well as total percentage to target. Even if I look at Sanath, even in Sanath's case, 50% branches have achieved target, and even he's hit the 100% mark. So my point is that if I look at the 26 branches which have achieved targets, 12 branches सिर्फ इन 3 regions में से है. So हमारा जो percentage to target है branch wise, हमारे को बहुत जरूरी है कि सारी की सारी branches targets achieve करें. हमारे ऐसे भी region है जहाँ पे 1-1, 2-2 branchों ने ही target achieve करे हैं. So targets are a joint responsibility, and I think we should support our team to achieve all the targets. But having said that, जो हमारा branch wise targets है, region का target पूरा हो रहा है, एक branch load extra ले रही है. हमारे को कोशिश करनी है कि हमारी हर एक branch अपना target पूरा करे. Currently, in the month of June, only 26 branches have achieved the target. So I think going forward,
रीजन वाइज आपके साथ ही डेटा शेयर हो जाएगा, आप सबके पास है भी ये फिगरें। हमारे को कोशिश करने की जो हमारी नंबर ऑफ ब्रांचेस है, मोर एंड मोर ब्रांचेस कम क्लोज और एटलीस्ट अचीव देयर एंटायर टारगेट। अब अगर हम आपका फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, जब सेकंड फाइल खोल दो क्वार्टर वाली, Varun has already mentioned that we may or may not have the changing targets. We might keep the targets, a single target for the entire year going forward. But these figures need to be kept in mind. In the first quarter, the total achievement that we've had is 90.27% as a group. And the balance, which is the balance 9 months remaining, is 41645, which is including the Q1 balance. आपका वैसे जो बैलेंस है, नॉट कीपिंग द कैरी ओवर इन माइंड, इज 40409, बट जो आपका पहले 3 महीनों में जो गैप आ गया है, आपका 1235 का गैप आ गया है। तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जो ब्रांचों को फिगरे कम्युनिकेट करोगे, प्लीज शेयर देम विद अस लाइक लास्ट ईयर। इफ यू वांट टू कीप वन फिगर गोइंग फॉरवर्ड, दैट इज ओके विद अस। इफ यू वांट टू कीप देम फ्लूइड, that is okay, but please keep this with you, and this is also with you, all of you have this figure। जो आपका बैलेंस है, इसको माइंड में रखना है, बैलेंस मेकअप करना है। आई थिंक द पास्ट 1.5 years जो हमारा टारगेट्स है, even branches are taking the targets very seriously, the ownership for targets have come up quite a bit, और जो टारगेट्स हैं, आपके टारगेट्स काफी रीजनेबल है, and I think the balance should be kept in mind। आपने जिस हिसाब से टारगेट देने, प्लीज हेड ऑफिस को सेम फिगर्स कम्युनिकेट कर देना, सो दैट हमारी जो बात होती है, देयर इज अ सिंगल नंबर बीइंग डिस्कस्ड। सो दिस इज द बैलेंस, दिस कैन बी शेयर्ड विद यू ब्रांच वाइज। आप लोगों के पास है, बट हम आपको एक बार और ब्रांच वाइज गैप भेज देंगे। प्लीज मेक श्योर दैट दिस गैप ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर इज टेकन अप। Line wise also, if we look at the position, we have completed targets for a couple of lines for the first quarter, RBL and Brixton was again mentioned। हमारे को make sure करना था, जहाँ पे हमने टारगेट्स पूरे करने के लिए मटेरियल दिया, सेल भी पूरा फोकस करके निकालना है। हमारे पास ब्रांचों में जगह लिमिटेड है, we need to make sure that our fast moving stock at least is selling, and all the fast moving lines we need to do justice, we need to make sure that our stock is selling। इसके अलावा जो आपसे अभी बात हुई है ऑनलाइंस की, ऑनलाइंस का जो हमारा परसेंटेज है, even now if I look at our percentage, it's 2.27% of your total sale is online। जो आपकी कंपनी की सेल आ रही है, केवल 2%, 2.27% हमारा ऑनलाइन से आ रहा है। मिस्टर चावला इन द हेड ऑफिस, वी गॉट अ होल टीम हियर। इंसेंटिव हमने 3% कर दिया, आपका पीओपी मटेरियल कर दिया, विदाउट टारगेट की भी कंडीशन सिंपलीफाई करके हमने 2% कर दिया। बट आई थिंक उसके बावजूद, चाहे यहाँ पर टीम है, चाहे मिस्टर चावला है, जब तक कि आप लोग बंदा नहीं रखोगे, सेल नहीं आएगी। आप लोगों के पास ओपन सैंक्शन है, आई थिंक हमने किसी को नहीं रोका ऑनलाइन का बंदा रखने के लिए, बट जो हमारी सेल का ट्रेंड है, वी बीन कमिंग डाउन डाउन डाउन, एंड आई थिंक द फोकस इज नॉट इन दीज लाइन्स। I think the head office team also, we will sit down together and brainstorm their role। But आपको जो चाहिए, support चाहिए, आप लोग बताइए, please get on a call। Mr. Chavla, please organize region-wise calls। Please get your team, let the focus only be our 3 onlines। Let's not focus on any other line, and let's get these lines kicking। I think currently the position is not comfortable whatsoever। I'm happy to see a couple of regions like Malhar's branches have picked up। I'm happy to see आपका Arjun की branches are above 3%। I'm happy to see even a couple of regions that we are above, only 3 regions are above 3%। So I think this is one area where we require a lot of attention, a lot of focus, and ये हमारी खुद की line है। So I think this is something that we should not excuse। इन लाइनों में टाइम भी ज्यादा मांगता है, एंड जब तक इन लाइनों की एमसीएल की बारी आती है, हम लोग बड़ी लाइनें बेच देते हैं। These lines require more patience, more training, but I think we can't be neglecting these lines। आप लोगों के सामने मार्केट में किस हिसाब से कंपटीशन चल रही है। अगर हम लोगों ने सर्वाइव करना है, हमारे को हाई जीपी लाइनें पकड़नी पड़ेंगी। These lines are high GP lines। Please make sure we are focusing on these lines। मेरे को एक बात की और बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, हम लोगों ने इंसेंटिव पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने बहुत सिंप्लीफाई करके इंसेंटिव पॉलिसी भेजी है। आप लोग सब यहाँ पे जो बैठे हो, रीजनल हेड्स हो, हमारी टीम को इंसेंटिव पॉलिसी का आइडिया नहीं है। आप मैनेजर्स छोड़ दो, मतलब आप सेल्समैन छोड़ दो, मैनेजर्स तक को इंसेंटिव पॉलिसी का आइडिया नहीं है।
अभी मैं नाम नहीं लूंगी, हम अभी एक ब्रांच में गए थे, हमारे पहुंचने से पहले बोल दिया गया था कि सबसे पहले आपको आते ही इंसेंटिव पॉलिसी पूछेंगे। इंसेंटिव पॉलिसी बोर्ड में थी, उनके हाथ में प्रिंट आउट था, फिर भी परसेंटेजेस का आइडिया नहीं था। एंड दिस इज व्हेन 3 months ऑफ दिस ईयर इज पास इन लास्ट ईयर की पॉलिसी है। आप लोगों के पास, सबके पास जूम है, आप लोगों ने इस टाइम ओनर्स अपने ऊपर लेना है कि आप लोगों ने अपनी पूरी टीम को देखो। आपके इंसेंटिव में स्टोर कीपर से लेके हमारा राइट ऑन टॉप एवरीवन इज कवर्ड इन द इंसेंटिव पॉलिसी। टीम को इंसेंटिव पॉलिसी समझाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई डाउट है, हेड ऑफिस समझाएगा। आपकी टीम में हर एक को इंसेंटिव पॉलिसी होनी चाहिए, हर ब्रांच में इंसेंटिव पॉलिसी डिस्प्लेड होनी चाहिए। देखो, आप लोगों को कुछ डेटा है जो कि हम लोग सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो आपका नेट प्रॉफिट का डेटा है, 50% आपका इंसेंटिव नेट प्रॉफिट का है, जो ब्रांच इंसेंटिव है, वो डेटा सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर होता है। एंड आपके ऑनेस्टली जो आपके मैनेजर्स हैं, आई एम श्योर आपके कुछ मैनेजर्स ऐसे हैं जिनको पता है नेट प्रॉफिट कैसे आता है। आपके 90% मैनेजर्स को कैलकुलेशन नहीं पता कैसे बनता है। उनको समझाएगा कौन कि नेट प्रॉफिट करना है तो ये वाली लाइनें बेचना जरूरी है। दिस अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी गिवन बाय द RM, एंड इनको समझाने का जो जिम्मा है वो हमारा है। उन तक फिगरें भी नहीं पहुंचती। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पे भी कुछ है, हमने वो देख के कवर करना है एंड इनको गाइड हमने करना है। जो आपको हेड ऑफिस लाइन वाइज टारगेट्स देता है, सोच समझ के लाइन वाइज टारगेट्स दिए जाते हैं। ओवरऑल नंबर तो हम हिट कर देते हैं कि आज इस लाइन में सेल नहीं आ रही, मैं यहाँ कवर कर देता हूँ। बट अगर आपको नेट प्रॉफिट कमाना है, ब्रांचों को ये समझाओ कि अगर आपके लाइन वाइज टारगेट्स पूरे हो जाएंगे और आपका स्टॉक और आउटस्टैंडिंग आपका कंपनी नॉर्म्स में रहेगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका ऑनलाइन बेचने से आएगा। आपको पता है क्या रेट जा रहे हैं, क्या TOD है, सब आप लोगों को पता है। जो आपका स्टॉक रिडक्शन है वो आपका GP से कम होता है, और जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें आपका HO इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये जो ब्रांचों को समझना है कि जो आपका नेट प्रॉफिट का जो आपका 50% इंसेंटिव है ब्रांच इंसेंटिव का, लाइन वाइज नहीं, जो ब्रांच इंसेंटिव है उसका, उसके लिए उनको अपना स्टॉक भी प्लान करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग भी प्लान करना पड़ेगा, और लाइंस भी प्लान करनी पड़ेगी। दूसरा, आपके दो तरह के मैनेजर्स हैं। एक आपके वो वाले मैनेजर्स हैं जिनको आना पाए तक पता है कि कितना बैलेंस टारगेट है इंसेंटिव कमाने के लिए, दूसरे जिनको आइडिया नहीं है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच दिस टाइम वी नीड टू मेक श्योर दैट जो पॉलिसी है हम अच्छे से समझाएं। आप लोगों को पॉलिसीज आएंगी, आप में से काफियों को आपको आपके रीजन की टारगेट्स आ चुके हैं, पॉलिसी मोटी मोटी आप लोगों को आ चुकी है। ब्रांचों को भी हम भेज देंगे पॉलिसी। हमारे को ज्यादा इनपुट्स आए नहीं है, एक दो जगह से हैं, वो हम कर देंगे। वी विल सेंड द पॉलिसी अक्रॉस, बट प्लीज मेक श्योर वंस द पॉलिसी इज रीच, प्लीज मेक श्योर दैट द पॉलिसी इज नाइसली एक्सप्लेन्ड। हम हेड ऑफिस में भी मिस्टर चावला को बोलेंगे, समवन अंडर हिम, और if he has the time, we'll probably get on calls, randomly call 5 branches a day and ask not the manager, one person below the manager to explain us the incentive policy. And just be RM की incentive policy clear नहीं होगी, उनको पकड़ेंगे हम next call में. So make sure that all your RMs understand, all the branches understand the policy. इसके अलावा जो हमारा stockless है, I'm happy आपका stockless की 3 जगह हमारी ब्रांच खुल रही है। Silchar is on the way. Silchar will be happening within the next week. Congratulations in advance, Anat. Bareilly is happening, and हाँ जी, and all the best. And आपका Gulbarga, sorry, your Bellary is happening. So my point is that जो आपका stockless का जो data है, काफी disappointing है हमारा stockless का data। आपकी 15 stockless हमारी stations identified है, एंड इसमें से 15 में से 9 स्टेशन ऐसे जिनकी पूरे महीने की सेल सिंगल डिजिट है। हम लोगों ने यहाँ पे भी आपको बोला हुआ है, आप लोग बंदा रखो, यहाँ पे किसी ने नहीं रोका बंदा रखने से, और जब तक कि यहाँ पे फोकस नहीं होएगा सेल नहीं आएगी, विजिट नहीं होगी, सेल नहीं आएगी। आपकी 15 में से 9 लोकेशंस ऐसी हैं जो कि सिंगल डिजिट पे है, एंड लास्ट मंथ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारी एक भी ब्रांच ने 20 का मार्क नहीं क्रॉस करा है। So I think this is one area. इसमें भी मैं इंडिविजुअली नहीं घुसने वाली, आप लोगों के पास, सबके पास फिगरें हैं, किसी को कुछ चाहिए फिगर्स, these figures can also be shared with you, but the figures for stockless are also not comfortable. I think this is something that we need to look at and we need to rework closely. अगर आप लोगों को यहाँ पे भी support और manpower चाहिए, please take that support.
Atul यहाँ पे he is providing you all the data you require. Anything you require that will be given, but these identified locations need a lot more focus. So this is my next point. इसके अलावा जो मेरा आपसे एक point है, हमारा जो current situation है, आपसे वरुण ने स्टॉक की बात कर ली है, even Ashna will be taking up stock at length. आपका आज की डेट में 30% स्टॉक ऐसा है जो आपका ओवर 90 डेज में है, एंड आउट ऑफ द 65 का स्टॉक दैट वी कैरिंग 20 crores इज ओवर 90 डेज. देखो ये स्टॉक आपका जगह भी ले रहा है ब्रांच में, वी लुकिंग एट बिगर ब्रांचेस, जगह भी ले रहा है, एंड देयर इज नो पॉइंट कीपिंग इट. सो प्लीज ट्राई योर बेस्ट, इसको जितना जल्दी लिक्विडेट कर सकते हैं. आशना विल टेक इट अप एट लेंथ विद यू. Even our outstanding, though from the 1st of June the outstanding has improved. हमारे आज भी 15% डीलर्स ऐसे हैं जो कि आपकी मार्च की आउटस्टैंडिंग करके ब्लॉक है. This figure can be shared with you region wise, branch wise, however you want it. आज की डेट में आपके 15% डीलर्स आउटस्टैंडिंग करके ब्लॉक है रीजन वाइज. आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, जो पेमेंट्स है हमारे को अपने सप्लायर्स को टाइम पे करना होता है. नो वन गिव्स अस एक्स्ट्रा क्रेडिट. हमारे को मेक श्योर करना है दैट वी आर आल्सो कलेक्टिंग आवर पेमेंट ऑन टाइम. आपकी सेल तभी पूरी होती है जब कलेक्शन आती है. आप लोग ये देखो, अभी हम लोगों ने लास्ट मंथ 91% टारगेट करा है. अगर हमारे ये 15% डीलर्स ऐसे जिन्होंने लास्ट एक्टिव डीलर्स हैं, ये इनका अगर हमारा काम टूटा है, अगर इनके साथ काम चल रहा था, we would have been at a higher number, even at a higher number. आप लोगों के साथ ये आपका रीजन वाइज डेटा है. आप लोगों का जो एमपी है, ये 20% ऑफ आवर डीलर्स आर ब्लॉक. मिस्टर कंधारी आपके 20.50% डीलर्स आर ब्लॉक. मिस्टर मल्हार 19.40% डीलर्स आर ब्लॉक. मिस्टर गुलाटी is not on the call, we'll share this data with him. तरुण आपके 16% डीलर्स ब्लॉक हैं. मिस्टर विवेक आपके तमिलनाडु में वी हैव 14% डीलर्स ब्लॉक. सनत आपके 13% डीलर्स ब्लॉक हैं. अर्जुन आपके 12% डीलर्स ब्लॉक हैं. मिस्टर महिपाल 10%. उमेद 10.40%. एंड दिनेश, आई थिंक आपका नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है इन द नेगेटिव वे, बट आई थिंक जॉब वेरी वेल डन. आपका सिंगल डिजिट है, एंड दैट टू लाइक बिगिनिंग सिंगल डिजिट. सो आई थिंक दिस इज फोकस व्हिच इज शोन. And this is something, अगर हमारा ये डेटा कवर अप हो जाए, this will help us with the more dealers, we'll be able to contact more dealers. इसका डेटा हम लोग आपको भेज देंगे. ब्रांच वाइज कमेंट्स भेज दीजिए. we'll be sending you all the dealer block का डेटा, and then we can talk about this. So from my side, this is it. आप लोग अपना next quarter देखो, look at Q2, all the best for Q2, but keep in mind the Q1 का gap. जहाँ पे gap है, keep in mind that आपने ये पूरा करना है. एंड कुछ आपकी ब्रांचेस ऐसी जिनका टारगेट पूरा हो जाता है, एंड में आके ब्रेक मार देती हैं. सो मेक श्योर दैट दैट इज नॉट हैपनिंग. आपकी सर्टेन ब्रांचेस हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द Q2. आई एम वेरी होपफुल दैट Q2 विल बी बेटर देन Q1. ऑल द बेस्ट. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आई थिंक अतुल आप एक बार फाइल दिखा दो. Last time, I think last month, job very well done by Pune, Nigiri and Siliguri branches, because इन्होंने अपने targets 100% से ज्यादा achieve करे हैं. And यहाँ भी आप screen पे देख सकते हो. First sheet दिखा दो. I think job very well done by Mr. Jayapal, Mr. Ube and Mr. Sanat. तो अगर इनकी branches achieve कर रही हैं, तो I'm sure बाकी branches भी achieve कर सकती है अपना targets. So आप you make sure that सारा, जैसे अदिति मैडम और वरुण जी ने भी कहा है, लाइन वाइज आप डिस्कस करो. इंसेंटिव पॉलिसी सबको बताओ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ज्यादा ब्रांचों में पता है इंसेंटिव पॉलिसी का. तो आप एटलीस्ट वो डायरेक्शन तो दो कि कौन सी ब्रांच ने कहाँ सेल, कौन सी लाइन सेल करनी है. आपको यहाँ से डेली टारगेट्स भी रोज अतुल भेजता है, तो ब्रांचों को एटलीस्ट उस पर फोकस करके, आई थिंक दैट इज वेरी इजी टू डू ऑल्सो फॉर ऑल द ब्रांचेस. तो वो आप फोकस कराओ कि डेली टारगेट्स आपके अचीव हो जाए ब्रांच वाइज. फिर सेकंड शीट दिखा दो आप. इसमें भी like I said, Pune, Nigiri and Siliguri very well done, and I'm sure in the coming months more branches will achieve their targets. बाकी नेक्स्ट दिखा दो आप. ये आपका जो ओवरडेज आउटस्टैंडिंग है, इसका हमने कम तो करा है,
बट अभी भी 958 दिखा रहा है। एंड आप अपना ब्रांच वाइज रिव्यू करो। इसमें भी आई थिंक जब हम आपसे कमेंट्स मांगते हैं एचओ लेवल पे तो कई बार आ जाता है टीओडी नहीं है, या कोई अगर डिफरेंस है, या क्लेम पेंडिंग है, या सेल्स रिटर्न है, तो वो केसेस आप अपने आरएम ऑफिस पे पहले रिजॉल्व कराओ, फिर यहाँ कमेंट्स भेजो। बिकॉज आपको हमने आई थिंक आरएम लेवल पे भी भेजे हुए हैं कमेंट्स जहाँ ब्रांचों में ठीक नहीं है, एंड दैट लास्ट मंथ वाज डिस्कस्ड विद यू। बट ये ब्रांच वाइज आप रिव्यू करो, जहाँ भी इश्यूज आ रहे हैं या शॉप क्लोज्ड है, राइट ऑफ है, वो अगर 3 साल के ऊपर हो गया है तो उसका आप पूरा डिटेल भिजवाओ। अभी भी थोड़े बहुत वो केसेस हैं अपार्ट फ्रॉम कोर्ट केसेस, बाकी भी आप देखो जहाँ आउटस्टैंडिंग फंसी हुई है वो आप पहले अपने एंड पे रिव्यू करो, फिर एचओ भेजना। देन उसमें हम देखते हैं कि अगर नहीं हो रहा है क्या है, फिर अकाउंट्स में आप डिटेल भेज देना फॉर योर डाउटफुल आउटस्टैंडिंग। आप स्टॉक का दिखा दो। आई थिंक दिस इज अ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न, जहां आप खुद देखो ऑलमोस्ट 71 lakhs चले गए ओवर 3 years। एंड अगेन आई थिंक मिस्टर महिपाल का अगर आप देखोगे पूरी कंपनी में सिर्फ 30,000 दिखा रहा है। मिस्टर महिपाल, आपके अंडर कितनी ब्रांचेस हैं? ये 7 ब्रांचों का है जी। तो 7 ब्रांचों में आपने देखो आपका अराउंड 30,000 दिखा रहा है, बाकी ब्रांचों का आप सब देख लो। ये 12-13 लाख तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये बार बार हम रिपीट भी कर चुके हैं, हमने ब्रांचेस भी विजिट करी हैं एंड इंडिविजुअली भी आपको बोल चुके हैं। एटलीस्ट जहां आप आरएम ऑफिसेज में बैठे हो उसको तो जीरो कराओ पहले। ये ओवर 2 years भी 120 बहुत ज्यादा, पता नहीं इस पे फोकस क्यों नहीं हो रहा है। आप देखो लास्ट मंथ से कुछ इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई एम श्योर व्हेन यू आर विजिटिंग आल्सो द ब्रांचेस, एक तो आप अपना डिफेक्टिव स्टॉक का देखो सारी ब्रांचों में, क्योंकि वहां भी एयरटेक और लेफ्ट लाइंस ऐसी लाइनों के अभी भी स्टॉक हैं। आई थिंक मिस्टर चावला ने भी आई थिंक लास्ट मंथ ये कैलकाटा में कराया है, बट अभी भी फिगर आपकी बहुत ज्यादा आ रही है ऐसा ना, तो ओवर 3 years आपका 12 लाख दिखा रहा है ऑलमोस्ट। तो ये आप सब रिव्यू करो कि क्यों नहीं इसमें, आप क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है जो आपने ओवर 1-2 lakhs रख लिया इन ऑल योर रीजन्स। इसका आप सब रिव्यू करो, अपनी ब्रांचों में डिस्कस करो एंड मेक श्योर इसको आप जीरो कराओ। बिकॉज ये बार बार हम बात करते हैं ये बढ़ता ही रहेगा, बिकॉज पुराना डेटा ऐड होएगा, बट एटलीस्ट जितना है जहां आप विजिट कर रहे हो एटलीस्ट मिसलेनियस एंड लेफ्ट लाइंस को आप जीरो कराओ। एंड wherever I think we saw some data जहाँ 12 या 13 साल पुराना स्टॉक भी दिखा रहे हैं अभी भी। तो आप अपनी ब्रांचों का पूरा ओवर डेज का देखो, ओवर 2-3 years का मैं आपको फिर एक बार भेज देती हूँ। एंड देन लेट्स सी आफ्टर 1 week, अब आपका मंथ एंड भी हो गया है, तो आई एम श्योर इन दिस मंथ यू कैन लिक्विडेट दिस, जितना भी पॉसिबल है इसको आप कराओ 71 lakhs को। ठीक है, फिर मेरा आपसे एक और पॉइंट था मिस्टर गौर, अभी एसटीयू का क्या है सिचुएशन? आपकी कलेक्शन आ रही है अभी एसटीयू में? मैडम कलेक्शन ठीक है इस महीने। बट अभी अभी भी जैसे मैंने आपको नागपुर लिखा था, अभी भी कुछ ब्रांचें आ रही हैं जो नहीं, नागपुर का मैंने 100% आपको रिप्लाई दिया है। एक ही पेमेंट मेरी बची हुई है नागपुर में, वो भी आ जाएगी इस महीने में। आपका पर औरंगाबाद में पूरा का पूरा दिखा रहा है अभी भी। औरंगाबाद, सेलम, चेन्नई, नासिक एंड बैंगलोर 1 यहाँ पे ज्यादा फंसा हुआ है। औरंगाबाद बिल्कुल भी नहीं आ रहा। औरंगाबाद का मैडम बात हुआ है, शायद ये 15 तारीख तक आ जाएगा पूरा। पूरा अमाउंट आ जाएगा? हाँ पूरा आ जाएगा, वो एक ही स्टॉक में दे देगा। औरंगाबाद में एक, अमरावती में पेंडिंग है, एक 2 चंद्रपुर। lakhs। हाँ चंद्रपुर में था, वो चंद्रपुर में कल आ गया है। ठीक है। हाँ जो आपका ये खाली सेलम एंड पुराना, चेन्नई, हाँ ये जी, खाली पुराना है। जो रेगुलर का है, रेगुलर अभी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, इट इज कमिंग। हाँ दिस इज ओवर 60। यस यस यस। एंड आपका सेलम एंड चेन्नई में अमाउंट्स तो कुछ नहीं है, बट पूरा का पूरा गया हुआ है ओवर 60। आई थिंक ये टीडीएस अमाउंट है शायद। तो इसको भी फिर आप सेटल करा दो। जी। एंड बैंगलोर 1 का भी आपका 12.39 दिखा रहा है ओवर 60। बैंगलोर का कुछ रिकंसाइल हुआ है, अभी थोड़ा सा रह गया है, हम्म। इस महीने में हो जाएगा। तो वो भी आप जुलाई में करा दो, बिकॉज जो 100% चले गए हैं या जो अमाउंट ज्यादा है उनको आप रिव्यू कर लेना, जी। वो आप देख लेना। ठीक है, बाकी माय ओनली मैसेज इज दैट एक हमारा, और मैं आपको डेटा सबको भेजूंगी रीजन वाइज विच इज योर अनरजिस्टर्ड डीलर्स, उसमें भी अभी मैं देख रही हूँ MCL 50,000 के अब बहुत केसेस हैं।
तो वो आप एक बार रिव्यू कर लो, जहाँ पे MCLs ठीक करानी है या कम करानी है वो आप जरूर डिस्कस कर लेना, वो मैं आपको सेपरेटली भेज देती हूँ। एंड जो आपका, जितना मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, डिफेक्टिव स्टॉक जहाँ होता है, जहाँ भी अब आपकी विजिट स्टार्ट हो गई है, आई थिंक लास्ट मंथ ऑल्सो आई स्पोक अबाउट द सेम थिंग, कि जहाँ आप जा रहे हो डिफेक्टिव है, ओल्ड स्टॉक है, देन एंड देयर आप डिसीजन लो। आपको पूरा सिस्टम का भी अब पूरा रेट्स मिल जाते हैं वहां, जो भी अगर स्क्रैप करना है, आप ये वेट मत करो कि बार बार इस पे हम बात करेंगे, बिकॉज ये वैल्यूज फिर बढ़ती रहेंगी। तो इस पे आप फोकस करो। आई थिंक जॉब वेरी वेल डन इन पंजाब एंड राजस्थान इन कलेक्शंस, हमारा आउटस्टैंडिंग बहुत कम है, तो वेरी वेल डन इन राजस्थान एंड पंजाब, एंड अदर ब्रांचेस ऑल्सो आई एम श्योर दे collect more amounts. So all the best for the coming month and the coming quarter. रविंद्र जी, हाँ जी, मैं सिर्फ ये जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट्स पे मुझे बात करनी है। कुछ हमारी जो नई लाइनें हैं, जैसे ब्रेक्स इंडिया एयर ब्रेक, इसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो सेल्स ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। जो मैंने ग्रीन बताया, सभी में हमारा सेल्स ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। और एयर ब्रेक में अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 59 पार्ट नंबर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं अब एयर ब्रेक के लिए, तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। 3, 4, 6, अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम आराम से 10-12 तक पहुंच जाएंगे, जो भी हमने टारगेट सेट किया हुआ है। सेकंड नंबर पीएसएफ में भी हमारा सेल्स इंक्रीज हो रहा है, 551, 586, 592। फ्यूब्स भी मैं देख रहा हूँ कि उसमें भी हमारा सेल इंक्रीज हो रहा है। लुक एफएजी बैरिंग भी सेल इंक्रीज हो रहा है। यूजे ग्रास भी इंक्रीज हो रहा है। ट्रू पावर भी इंक्रीज हो रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिनमें अब आप ये देखिए, जो वाइपर ब्लेड, हमने अभी वाइपर ब्लेड शुरू किए हैं, बहुत अच्छी सेल आई है। 8.22 की लुक में आ गई है, एंड 5.14 हमारी पावर टूल्स में आ गई है। तो 13 लाख का हमने वाइपर ब्लेड हमने लास्ट मंथ बेचा है। देन सुंदरम फास्टनर्स में भी मैं देख रहा हूँ कि हमारी सेल अब इम्प्रूव होनी शुरू होगी है। जो पहले जीएसटी का इशू था, वो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है। जो 28%, हालांकि सुंदरम फास्टनर्स तो 28% को रिवर्स नहीं करेगा, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को। इसमें भी हमारी सेल इम्प्रूव कर रही है। एसकेएफ ऑयल सील में मैंने लास्ट मंथ बहुत अच्छी सेल देखी है, 2.13। तो मेरा ये जितनी भी मैंने ग्रीन वाले जो इम्प्रूव होती हुई लाइनें आपको दिखाई हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड, जुलाई ऑनवर्ड, ये सेल हमारी इनसे आगे ही बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। आप देखिए, क्योंकि इनमें हमें काफ़ी अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है। एबीआई ब्लू में मेरा कंसर्न है कि हम 36 से 27 पे आए, 27 पे 19 पे आ गए हैं। जबकि मैं मैन्युफैक्चरर्स का अगर शेयर परसेंटेज देखता हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि जीएमए का शेयर परसेंटेज कम हो रहा है। अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे ख्याल से ठीक काम कर रहे हैं। तो इसको वापस मेंटेन करिए 35, 36 की रेंज में। ये अभी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, 19 तो बहुत कम होता है। कूलेंट में भी मुझे थोड़ा सा कंसर्न था। ब्रेक्स इंडिया कूलेंट में 41.28 लास्ट मंथ इनकी स्कीम विड्रॉ हो रही थी। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस जून के समर सीजन में, समर टाइम पे हमारी सेल काफ़ी अच्छी आएगी, बट वो 28 से भी डिक्लाइन होकर 26 पे चली गई है। अभी आप ये मान के चलिए कि जो 3 रुपये वाली स्कीम वाला मटेरियल है, ये हमारे पास रहेगा। जुलाई में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी प्रेमपाल जी 3 रुपये वाली स्कीम जुलाई के लिए डाल देंगे, तो आप जितना मैक्सिमम सेल कर सकते हैं इस महीने करिए, बाकी तो फिर आगे जो भी सेल आएगी देखेंगे। जीएस में भी थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो गया। हम किसी टाइम पे, मतलब अप्रैल में 10 लाख पे पहुंच गए थे, देन 9, अब 7.5 पे आ गए हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसमें कंसर्न दिख रहा है कि भी क्यों हो रहा है कि जब हम एक तरीके से मेहनत करके ब्रांचेस थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, फिर वापस नीचे जाना शुरू कर देती हैं। इन चीज़ों को प्लीज़ देखिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। सारी नई लाइनें हैं। एफएजी सीजेएस, ये हमने नई लाइन शुरू की है। इसमें आने वाले टाइम में हमें काफ़ी अच्छा बिजनेस नज़र आएगा। आरबीएल, वरुण जी ने भी बात की है। अब ये देखिए कि
अगर हम किसी लाइन को फोकस वे में बार बार कह रहे हैं कि उस लाइन को थोड़ा सा देखो, और हमने 7.94 का टारगेट बनाया था इसका, तो 7.94 का सेल्स टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाया, सीधा हम 548 पे आए हैं। अब हमने इस महीने 6.12 की परचेज की, यानी 6 करोड़ 12 लाख रुपए की हमें परचेज करनी पड़ गई। यही अगर अगर हमारी सेल हो जाती तो मुझे लगता है कि भाई हमारा ये स्टॉक अब आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि अगर 6 करोड़ 6.25 करोड़ का हमने मटेरियल खरीदा है, 5 करोड़ 5.5 करोड़ की हमारी सेल आई है, तो अननेसेसरी हमारे स्टॉक पे असर आएगा इसका। तो मेरी इसमें रिक्वेस्ट है कि जब भी हम किसी भी लाइन को फोकस करते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, उसके ऊपर अपनी टीम को पूरा एडवाइस करो कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे, ताकि किसी भी तरीके से हमारा स्टॉक अनहेल्दी ना हो। आरएमएल में भी मैं थोड़ा सा डिक्लाइन देख रहा हूँ, लास्ट मंथ से 571 से 478 पे आ गए, जबकि हमारे पास तकरीबन 7.5 करोड़ का स्टॉक है और उसमें 1.8 करोड़ का स्टॉक हमारे पास पुराने रेट का है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करते तो ये 5 5.5 से पार हो सकता था। तो मेरा यही एक स्क्रीनशॉट दिखाने का पर्पस था कि जितनी भी नई लाइनें हैं, वाइपर ब्लेड में बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा है। अब ये आने वाले 2 महीने जो रेनिंग सीजन है, इसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा बिजनेस मिल सकता है, इसका पूरा फायदा उठाइए। मेरी तरफ से इतना ही है सर, थैंक यू। चावला जी। Anji. I think most of the points are already covered. I would just like to touch upon lube. हर ब्रांच से बहुत डिटेल में बात की है कि ल्यूब जो है, आपने भी बोला हमारी अपनी लाइन है और जीपी भी कंट्रीब्यूट करता है और इंसेंटिव भी कंट्रीब्यूट करता है। हमने मार्च में 1 करोड़ 36 लाख का स्टॉक इसलिए रखा, सबको बताया था कि हमारी जो प्राइसेस हैं बढ़ने वाली है। फिर भी अप्रैल और मई में हमने अच्छी सेल की। जून में सब मेरे को बोल रहे हैं कि डीलर जो है वो प्राइस एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भैया हमें तो अप्रैल में ही मालूम था कि डीलर ने प्राइस एक्सेप्ट नहीं करना, तो फिर हमने उसको मार्च के प्राइस में क्यों बेचा? मेरा सबसे एक यही क्वेश्चन है। ये तो हर बंदा जो ब्रांच में बैठा हुआ है, ब्रांच मैनेजर से लेकर सेल्स ऑफिसर तक, उसको भी मालूम है कि बाजार में तो मस्टर्ड ऑयल का भी रेट जो है वो 110 से 185 हो गया। हमारी फैमिली भी मांग रही है। हमें उसी टाइम चाहिए था अप्रैल और मई में, या तो इसका हम प्राइस बढ़ाते। हमने नहीं बढ़ाए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, हमने डीलर को फेवर किया है। जून के महीने में अगर मेरे को डीलर ये बोल रहा है कि आपकी प्राइस की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो एक तो मुझे ये समझ नहीं आया। अभी जो हो गया सो हो गया। फ्रॉम दिस मंथ मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अभी देख रहा था जैसे TRW में हम लोग TQ बेचते हैं, हमारा TQ हमेशा ट्रम्प काट रहा है। उनका भी प्राइस बढ़ गया है, वो 200 प्लस 18% 236 में बेचेंगे। हमारा प्राइस एक 161 प्लस GST है 190 रुपीज। अगर हम इस महीने उसको USP बना लें और सारे डीलर्स को हम कोशिश करें कि हमारी डबल सेल होनी चाहिए, तो देर इज नो रीजन कि हम अकेला TQ 50-55 लाख का बेच सकते हैं। तो देन slowly and slowly we'll make the market to accept our gear oil also and 15W40। एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी है। आई एम टॉकिंग टू द ब्रांच मैनेजर लेवल ऑल्सो, और जहां से जतिन भी बोल रहा है, सबको यही बोल रहे हैं कि इस महीने हमने TQ जो है वो 189.9 का या 190 का पड़ रहा है। लेट्स फोकस ऑन दैट। एंड आदित्य जी ने बहुत अच्छी तरह कवर किया और वरुण जी ने भी इसकी GP का और इंसेंटिव का कंट्रीब्यूशन कवर किया है। एक मैं और बोलूंगा, क्वांटिटेक, आई थिंक कूडोस टू द टीम, वी ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और हमने 81.50 लाख जो क्वांटिटेक किया है, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी वर डिपेंडेंट ऑन वन डीलर इन राजस्थान फॉर 10 लाख। उम्मीद आपको मैंने कई बार डिस्कस किया ये वाली बात। वो पार्टी 10 लाख की जगह हमने पूरे राजस्थान में 2,42,000 किया। दैट मीन हमने 10 लाख की सेल लूज की है। फिर भी अगर हमने 81.5 किया तो दैट मीन वी आर इंचिंग टुवर्ड्स 90 लाख। और उसके बाद हमारा अगला टारगेट है 1 करोड़ का, और ये इंसेंटिव लाइन है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस लाइन को छोड़ना नहीं है, देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और मैं विवेक जी से और गिरी से अच्छी तरह डिस्कस कर चुका हूँ। तमिलनाडु में इज वन एरिया वेयर देयर इज अ कंसर्न वी नीड टू इम्प्रूव, और कर्नाटका से वी हैव ऑलरेडी स्पोकन, वी आर इम्प्रूविंग। दिस इज एज फार एज क्वांटिटेक। और एक गैब्रियल में मुझे समझ नहीं आया, वी हैव ऑलरेडी रीच 125, व्हाई वी हैव ड्रॉप टू 113? पिछले महीने भी ड्रॉप था। अगर किसी को कोई गैब्रियल में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। आज तो कोई सप्लाई का भी इशू नहीं है,
Mr. Raman has started supplies even in Chennai. We have to come up to their expectation. Last week उनकी पूरी टीम ईस्ट में थी. सनत ने और जो मित्रा है, इन दोनों ने उनका प्रोग्राम भी अटेंड किया है एंड दे आर वेरी अपबीट. मेरी उनके बाद बात भी हुई है. तो गैब्रियल इज लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई हमारी सेल जो है वो 1.5 करोड़ पहुंचनी चाहिए. तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है वो करे. और वरुण जी, आपने महालय ऑलरेडी कवर कर लिया है. इन स्पाइट ऑफ ऑल द ups and downs of the incentive which we are losing, हमने महालय 96.37 किया है. We started the month with 2 crore 36 lakh of stock. महालय का ये स्टॉक मैंने वरुण जी से डिस्कस किया था. We have to bring it down to 2 crore. My funda is very clear, 1:2. अगर 1 करोड़ की सेल करनी है, 2 करोड़ का स्टॉक रखना है. मेरी सब आरएम से रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्टॉक खुद देखो. आपने जो सेल करनी है आप अपने सामर्थ्य से कर रहे हो. But for God's sake, please keep the stock to 2.1 level only. Don't take it to 2.5 or 3 level. और महालय को मुझे लगता है कि हम 1-2 महीने में कंट्रोल कर सकते हैं. हमारा डबल स्टॉक रखेंगे और ये somehow we will try our best क्योंकि STU नहीं है to reach from 1 crore to 1.1. So God job good done on Mahalay. And last is the special efforts done by the team in spite of the shortage of drive shafts in Delphi. We have done all-time high 63.2 lakh. तो बाकी हम मेरी टीम यहाँ पे बिल्कुल सबकी सपोर्ट के लिए बैठी हुई है. लाइनर वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम 20 लाख पहुंचेंगे. थोड़ा शॉर्टफॉल रह गया है. बेरिंग भी रह गया है और हैरिसन भी. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी 2-2, 4-4 लाख से ही अगर हम पूरे पहुंच जाते हैं, अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो एज ए कंपनी इफ वी आर डूइंग 42 करोड़, देयर इज नो रीजन कि हम उनकी बहुत माइनर शॉर्टफॉल है वो मिड मंथ में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा. दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई एम हियर टू सपोर्ट एवरीवन. थैंक यू. Anybody else who would like to add or say something? कोई और कंसर्न जहाँ पे उनको दिक्कत आ रही हो सेल में या कोई डाउट हो या कुछ हो? If not, then we can end this call here. The one thing that I want to share is हमारे जो ब्रांच वाइज रिव्यूज थे वो हम फिर से शुरू कर रहे हैं by mid of next week on Zoom. They will be held only in the second half starting Wednesday. We will do it in the reverse order of जहाँ पे जिस region का gap सबसे ज्यादा है Q1 का, we will start with that. So that schedule will be shared with you shortly. And let's meet all our branches once again. Thank you. Best of luck. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you, sir.